जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट। भाई मैंने समस्त को ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी ना क्या किसी प्रोब्लेम होची? ऑडियो वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी ना? चैट सेक्शन में जणो। ओके, तो पूर्व क्लास रे हमें कौन डिस्कशन करिथिले ना? पूर्व क्लास रे हमें डिस्कशन करिथिले ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड रो पाखा पाखी 50 टा क्वेश्चन। ओके, आज आउ रेस्ट 50 टा क्वेश्चन को हमें डिस्कशन करिबा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमको कौन कही आज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द सेफेस्ट लैडर? ए जो हमें यूज करूछु कोटा सबठारु सेफेस्ट लैडर व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? तमे जते बेले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रे काम करिवो ना से समय रे को टाइप रो जो लैडर टा तुम बहुत सेफ? सबठारु सेफेस्ट लैडर काठर सेडीटा ना फाइबर ग्लास रो सेडी ना एल्युमिनियम सेडी ना स्टेप टूल सेडी ना आयरन सेडीटा? समस्त चेष्टा करा अटेंड करने को। ओके, जन्मंजय भाई कल सर ऑप्शन बी, चंदन भाई कल ऑप्शन बी। ओके, इस भौणी कहते ऑप्शन ए वुड रो। नेक्स्ट आउ कार कौन आंसर अच्छी देखो? सबुठारु सेफेस्ट लैडर है कोटा ना फाइबर ग्लास टा है सबुठारु सेफेस्ट लैडर। ओके, ऑप्शन बी ही हम एटा। कौन प्रकाश भाई आयरन रो सैड रे तुम काम करिवो? आयरन लैडर को यूज करके तुम काम करिवो कि ओवरहेड लाइन रे? इलेक्ट्रिक शॉक खाई मरी जा भाई, जान लो कि नहीं? चलो छाड़ से क्वेश्चन। which type of extinguisher is used to put off electrical fire? Which type of extinguisher is used to put off electrical fire? को टाइप रो एक्सटिंग्विशर? फोम टाइप, सोडा एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर? यार आंसर कौन हम? एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर सर CO2 हो पारिबो, हेलोन टाइप हो पारिबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डैश करंट फ्लो थ्रू द ह्यूमन बॉडी इट इफेक्ट आर कौन रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉब्लम? देखो से कौन कहला केते परिमाण रे आम बॉडी रे इलेक्ट्रिकल फ्लो हेले आमर ह्यूमन बॉडी रो तार जो रेस्पिरेशन सिस्टम टा अछि खराब बा रेस्पिरेशन सिस्टम बा निश्वास प्रश्वास नबार प्रॉब्लम हे जिवो। केते एम्पियर? If dash milliampere current flow through the human body, its effects are reflected the form of respiration system upare problem पकेबो। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम 20 रु 30। ओके, 20 रु 30 मिली एम्पियर। ओके, द एभव इमेज इंडिकेटेड ए जो इमेज टा इंडिकेटेड करूची काहाकू? सबु एग्जाम पई ए इमेज रु गोटे क्वेश्चन उठौची। ओके, प्रत्येक एग्जाम रे एटा इंपोर्टेंट रहूची। सेफ्टी जो चैप्टर सेफ्टी अछि ना, इंपोर्टेंट ए रहूची कि प्रत्येक इमेज गोटे गोटे इमेज उठे की पचारि दोची तार ना कोन? ए जो इमेज टा समस्त देखुछो यार नेम कोन? एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर रेडियो एक्टिव हैजर्ड। रेडियो एक्टिव हैजर्ड को हमें केमिति इंडिकेटेड करूछु ना सर? फास्ट कथा ला एटा गोटे वार्निंग साइन रो इमेज टे जेहेतु एटा ट्रायंगुलर शेप रो अछि। ओके, आ ए इमेज टा काहा को इंडिकेटेड करूची ना सर? रेडियो एक्टिव हैजर्ड आगरे अछि बोली से हमको जणे दोची। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स शुड बी डन फॉर ए कोन पर्सन एक्सपेरिएंसिंग हीट रिलेटेड इलनेस?
यार आंसर कौन हम समस्त 4 सेक्शन आंसर दियो 5 नंबर क्वेश्चन which of the following should be done for a person expressing heat related illness जदि कौन सी प्रकार गोटे लोकटे हीट रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम रे समस्या रे पड़ी जाइछि देन ताको हमें कोन करबा निहात दरकार एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर वेयरिंग करबा कोल्ड वेट क्लोथ्स ता ऊपर गुडे दबा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not a safe work procedure to prevent electrical accident समस्त 4 सेक्शन आंसर दियो एमिति कोटा गोटे अछि जोटा कि सेफ वर्क प्रोसीड्यूर रे जाउची प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को प्रिवेंट करिया पई कोटा गोटे सेफ वर्क प्रोसीड्यूर कोटा हबो 56 नंबर आंसर कौन समस्त 4 सेक्शन आंसर दियो 756 रो एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर नेग्लेक्टिंग टू यूज कौन एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट केबे हेले भी हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बिना यूज करी की काम करिबे सब बेले हमें कौन यूज करी की तापर हमें काम करिबे नेग्लेक्ट केबे हेले भी करिबा नै ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन freezing current is the increase in the value of current which cause in used contraction of a person expense to an electrically shock and prevent karibo it from being separated from the current secure what is the approximate range of this freezing current ro rate बोली तुमको केते बोली पचार देखो क्वेश्चन ता एति की कोन freezing current रो तार अप्रोक्सीमेट रेंज केते बट आमर टाइम वेस्ट करिया पई एते लंबा क्वेश्चन टाको करि देछि पिला माने डरी के क्वेश्चन टाको पढिबेनी कोन क्वेश्चन टाको डरी के पढिबेनी छाडी देकी पळि आसी देखिला बेलको लास्ट एति की मात्र कोन पचारि जे हमगु हमें फ्रीजिंग करंट रो अप्रोक्सीमेट रेंज टा केते हमें जानिबा दरकार केते रहउची एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर कौन ना सर 10 रु 40 मिली एम्पियर नेक्स्ट व्हाट इज द enclosure used in electrical equipment to ensure that people do not accidentally come in contact with its live particle देखो एमिति को जिनिस बा को इनक्लूजन को हमें यूज करूछु इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रे हमें कोन कोनोसी प्रकार व्यक्ति जेमिति ता कांटेक्ट रे न आसीबे कवरिंग ना सर ग्राउंडिंग ना लेवलिंग ना ग्राउंडिंग को टाइप रो इनक्लूजर हमें यूज करूछु इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रे टू इंश्योर करिबा जेमिति दैट पीपल डू नॉट कोन एक्सीडेंटली कम इन कांटेक्ट्स विथ द लाइव पार्ट ऑफ कॉल ताको हमें कोन कहिबा ताको गार्डिंग बोली कुहा होची GUARDING ऑप्शन बी हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस पचारला गोटे ह्यूमन बॉडी रो इंटरनल रेजिस्टेंस पचारला को कंडीशन रे ना इंड्यूसिंग स्किन इज द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेट हारो से स्किन रो पचारिची स्किन रो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पचारिची केते रहिबो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस इंड्यूसिंग स्किन आम ह्यूमन बॉडी रो स्किन रो इंटरनल रेजिस्टेंस रो केते बोली पचारि एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर 500 रु 3000 ओम केते ना सर 500 रु 3000 ओम पर्यंत रहउची तार इंटरनल रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द वार्निंग साइन इन द पिक्चर्स इंडिकेटेड ए जो वार्निंग साइन ता देखैछि ओके एइता को टाइप रो वार्निंग साइन को देखैछि इंडिकेटेड करिछि
कौन हम एक्सलेंट महेश्वर भाई कौन ना सर स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर समस्त करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन रो तार ये बैकग्राउंड कलर टा पचारा कौन वार्निंग साइन रो तार ये बैकग्राउंड कलर टा हमको पचारि को कलर एक्सीलेंट ऑप्शन सी कौन येलो कलर बारंबार ये क्वेश्चन टा आसुची रिपीट होची आइडेंटिफाई द सिंबल बिलो ए जो सिंबल टा देइची एटा को टाइप रो सिंबल बोली पचारिची सिंबल नेम कौन बोली पचारिची एक्सीलेंट कौन सी प्रकार इलेक्ट्रिकल हाजर्ड को आमे छुईबानी बा डू नॉट टच ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू सेफ्टी प्रोग्रामर स्टैंडर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिगार्ड टू सेफ्टी प्रोग्रामर स्टैंडर्ड जो सेफ्टी प्रोग्रामर स्टैंडर्ड हमरो अछि कोठा हो नुआ कॉन्सेप्ट गोटे भलसे ध्यान देकी देखो ओके एई क्वेश्चन टा आसी कोठू ना सर आमे तो 5s कॉन्सेप्ट पढी चंती गोटे 5e बोली गोटे कॉन्सेप्ट अछि ओके एते डिटेल ले मते ता विषय रे जाना नै तथै मु तमन को कहि दोची कोन कहले 5e माने कोन फर्स्ट e हला कोन एजुकेशन सेकंड e हला कोन इंजीनियरिंग थर्ड e हला इवैल्यूएशन फोर्थ e हला कोन ना सर एनकरेजमेंट आ गोटे कौन है फिफ्थ है आमर हूँ एनफोर्समेंट ओके कौन कहला 5e कॉन्सेप्ट रु क्वेश्चन आसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू सेफ्टी प्रोग्रामर स्टैंडर्ड कोटा गोटे सेफ्टी प्रोग्रामर स्टैंडर्ड कोटा यार करेक्ट बोली पचारुची ओके सेफ्टी प्रोग्रामर स्टैंडर्ड 5e कॉन्सेप्ट कहले पांचटा ई फर्स्ट ई हला कोन फर्स्ट हला एजुकेशन सेकंड ई हला इनकरेजमेंट ओके सेकंड क्वेश्चन थर्ड है इंजीनियरिंग फोर्थ है एनफोर्समेंट फिफ्थ है इवैल्यूएशन ओके एट्रु कोटा ताले 5 रु एटा आसीची ओके एटा को ईएस रु आसीची ना 5 रु आसीची कोटा ना सर रिगार्ड टू सेफ्टी प्रोग्रामर टा 5e कांसेप्ट रु आसीची ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट What first action will be taken if a person faints? जदि गोटे पर्सन टे कोन होची ना फेंस हे जाउची देन हमें फर्स्ट एक्शन कोन करिबा जदि कोनोसी प्रकार गोटे लोकटे बा गोटे व्यक्तिटे अनकॉन्शियस बा सेंसलेस हे जाउची हमर फर्स्ट स्टेप कोन रहिबा दरकार एक्सीलेंट जदि कोनोसी कारणरु गोटे पर्सन टा फेंट हे जाउ किबा अनकॉन्शियस हे जाउ बा चेता शून्य हे जाउ फर्स्ट हमें ताकू चेक करिबा तार ब्रीथ करूची ना ब्रीथ करूनी ओके समस्तंगर करेक्ट आंसर द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इज कोन द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इज डैश कौन हम द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इज कॉस्ट ऑफ द कौन अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ द इंजुरी ऑप्शन बी हम भाई एटा which of the following storm is not a part of 5s system 5s system रे कोटा गोटे पार्ट नुह बोली पचारि which of the following storm is not a part of 5s system 5s system रे हम पांचटा दिन से जानिथिले कोन शॉर्ट सेट इन ऑर्डर साइन सस्टेन स्टैंडर्डाइजेशन पांचटा दिन से जानिथिले तो यार आंसर कोटा साइन तो अछि शॉर्ट तो अछि सस्टेन भी अछि बट स्वैप टा नाही ओके पांचटा दिन से जानिले शॉर्ट सेट इन ऑर्डर साइन स्टैंडर्डाइजेशन ता सहित सस्टेन ताको कंटिन्यू करिबा ए पांचटा जिंस हम पाखरे अछि
बट स्वाप टा हम पाखरे नाही 5S कांसेप्ट रे सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the followings is not a cause of fire? Fire पाई मोस्टली हम पाखरे केतेटा कज अछि मोस्टली तीनटा कज कोन कोन मु तुम मानको कहितली गोटे ट्रायंगुलर रहउची फायर पाई मोस्टली तीनटा जिंस रहउची कोन गोटे हला ऑक्सीजन गोटे हला फ्यूल आ गोटे हला कोन ना हीट बा टेंपरेचर जहा को हमें कहउचो ए तीनटा भितरु जदी गोटे को हमें हटै दबा देन फायर हबो नाही ओके ऑक्सीजन को हटेला हमें कोन कहिबा स्मोदरिंग फ्यूल को हटेले ताको हमें स्टार्विंग बोली कहबा हीटिंग को हटे देले ताको हमें कूलिंग बोली कहबा तो यार आंसर कोन हबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर रिमूव कनेक्शंस इन 3 फेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ फायर तो ये हमें कौन करबा रिमूव द कनेक्शन इन 3 फेज मोटर कनेक्शन को हटे दबा रॉन्ग फ्यूज रेटिंग जदि हमें यूज करबा फायर हे जीवो लूज कनेक्शन थिले मध्ये फायर हबो डैमेज इन्सुलेशन बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल जदि तार डैमेज इन्सुलेशन रहिला ता परे भी मध्ये कोन ना सर हमरो फायर होबार चांस अछि ए तीनटा जाकर फायर हे जीवो ओके जदि हमें रिमूव कनेक्शन करिथिबा 3 फेज मोटर कनेक्शन नाही माने फायर केमिति होबो सी कहला ए कारणरू हबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन foam and dry powder fire extinguisher are used for which type of fire देखो गोटे हला foam आ गोटे dry powder ए दीटा जाको को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर रे जाउची बोली हमको पचारि छी को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर रे जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सेटा क्लास बी टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर रे जाउची foam टा आ dry powder टा नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग पिले आर्क वेल्डिंग समय आम डैश शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द आई आखि को बंचेबा पई बा हमर आई जेमिति खराब न हो सोल्डरिंग समय आम का को यूज करूछु इस पुणी ऑप्शन बी केमिति हबो सन ग्लास को यूज करिबा कि नाही ब्लैक ग्लासेस को यूज करिबा हला ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर एई क्वेश्चन ता जो भाई भणी माने आईटीआई एग्जाम देइथिबो ओके समस्त ए क्वेश्चन ता देखिबो तमे जदी रॉन्ग आंसर मारिबो देन तम मानकु मार्क मिलिबो सीबीटी रे ना नाही हैंड स्लाइड बोली देइथिबो हैंड स्लाइड ओके मन पड़छि ना ब्लैक ग्लास कवर हेतिबो न आ गोटे जिंस रो जे फेस स्लाइड गोटे रोची ताको भी मध्ये हम व्यवहार करि पारछु ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फिल्ड इन हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर गोटे हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर रे आमे को टाइप रो एक्सटिंग्विशर को व्यवहार करूछु ओके 68 रो तमे बी कहउलो तो ओके किछि कथा नै ओके 70 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स मटेरियल गोटे कोठी हेलोन टाइप ओके हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रे मोस्टली हमें केतरा जिंस को इनपुट करौछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मिथेन बोली एटा हमें Option A is the correct answer. Next question. Which statement is incorrect about water extinguisher? ए जो water extinguisher विषय चारिटा स्टेटमेंट देला सेति भितरु कोटा तार रॉन्ग अछि बोली पचारुछि कोटा इनकरेक्ट अछि बोली पचारुछि Which statement is incorrect about water extinguisher? Excellent महेश्वर भाई कौन ना सर ताकू एक्सटिंग्विशर द फायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन एलिमेंट ऑफ द फायर ट्रायंगुलर तो पढ़ी समस्ते ऑक्सीजन को सेटा स्मोदरिंग हबो
बट ये कौन कही ऑक्सीजन एलिमेंट को जब आम हटई दौचु से सी कही कि एटा कौन वाटर एक्सटेंशन वाटर हेले कौन वाटर आम कौटी फ्यूल आ गोटे रहा कौन ना सर हीट हीट को हटेबा से आम वाटर यूज करके कूलिंग कर दौचु ओके एटा ऑक्सीजन को हटाबनी एटा हीट को हटेबा आम वाटर जेट को यूज करूँ सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बी हम डी भी हम है should not be used for B and C fire flammable liquid रे आउ ग्लास कौन कहला ना गैसेस रे आमे वाटर जेट को यूज करि पारनु भूल अछि देखो आमे वाटर टा को को जगह यूज करिबा वाटर एक्सटेंशन क्वेश्चन कोन पचारि छि आगे देखो आउ ऑप्शन टा देखो मोस्ट ऑप्शन टा कोटा को माने केउटा अधिक प्रतिशत रहउछि कोन माने चांस रहउछि ठीक होबार ओके ताकू देखि तमे ऑप्शन आंसर मारियो जदी 50-50 रहउछि कि 50-70 रहो 27-80 रहउछि से परसेंट देखिबो ओके तमे कहबा हिसाब रे कहउछि कि सर क्लास बी आ क्लास सी फायर रे मो फ्लेमेबल लिक्विड आ गैसेस रे वाटर एक्सटेंशन को यूज करि परिबे नै तो मत ये कौन कही देख मूल एक्सटिंग्विशर द फायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन एलिमेंट ऑफ द फायर ट्रायंगुलर आमर ऑक्सीजन एलिमेंट को हटेबा पई आमे एक्सटिंग्विशर को वाटर एक्सटिंग्विशर को यूज करूछु कि नाही ना तमे मते कहो गोटे जिंस आमर फायर पई तीनटा कॉज दरकार हैला गोटे ऑक्सीजन गोटे फ्यूल आ गोटे हीट आमे वाटर टा कोठी पई यूज करूछु वाटर टा आमे कोठी पई यूज करूछु हीट को हटेया पई वाटर यूज कला फरे जाय कि कूलिंग होची सेठी हमको कौन कहिछि एक्सटिंग्विशिंग करिबा फायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन एलिमेंट को हटेबा बा एक्सटिंग्विश करिवो फायर ट्रायंगल ले तो यार मोस्टली अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी ही हबो ऑप्शन बी भूल हबो नै बट हमको देखिबा को पड़िबो एटा जेहेतु गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टे तो से माने नै चंदी आंसर ऑप्शन डी ओके हमरो यूपीपीसीएल टीजीटी 2 रो एटा गोटे क्वेश्चन ओके 2019 रो गोटे क्वेश्चन सेठी से माने रिगार्डिंग करिसंती कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके हाँ बी आउ जो सी पे आमे ड्राई पाउडर को यूज करूछु मना करू नै ओके बट देखि के आमे ऑप्शन देखि के अटेंड करबा को पड़िबो कोन क्वेश्चन को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दबा को चेष्टा कर समझते व्हिच कलर बैंड डिनोट्स द कार्बन डाइऑक्साइड ओके कंटेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर व्हिच कलर बैंड डिनोटेड देखो कलर बैंड रो क्वेश्चन आसिला ओके कलर बैंड मध्य इंपोर्टेंट रहउची समस्त ताको टी देखिबो हला जेति कि हमर फायर एक्सटिंग्विशर अछि तार कलर बैंड गुडा फर्स्ट कहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आखी बुझी कि हमें सब जगह रे यूज करि परिबा CO2 टाको कोन पर्टिकुलर सेमिति गोटे कोन जिंस अछि जोटी हमें CO2 टाको यूज करि परिबानी सब जगह रे यूज करि परिबा सो एटा कोन ब्लैक हबो ओके वाटर सेमिति वाटर टा कोन हबो रेड हबो ओके फोम टा केमिति हबो क्रीम कलर रो हबो नेक्स्ट which classes of fire are caused by flammable liquid such as petrol tire और paint कौन कहला ना सर जो फ्लेमेबल लिक्विड गुडा को अछि जथा पेट्रोल हो टायर हो बा पेंट हो ताको एक्सटिंग्विशिंग करबा पई सॉरी कोन which class of ए गुडा सब को क्लास रो फायर रे जाउची फ्लेमेबल लिक्विड कहला मन रखि दबो गोटे शॉर्ट फॉर्म सॉलिड लिक्विड गैसेस क्लास ए क्लास बी क्लास सी ओके समस्त तो हम ये रे पढ़ी छ सब सॉलिड लिक्विड गैसेस आउट हमर स्टेट रे ना नहीं फ्लेमेबल लिक्विड गुडा सब तक क्लास बी फायर रे जाउची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
What is the main element used in wet chemical fire extinguisher? Wet chemical fire extinguisher रे हमें कहा को mostly use करूँ? What is the main element used in wet chemical fire extinguisher? कौन फॉस्फोरस ना पोटेशियम? एटा ऑप्शन सी हबो पोटेशियम ही करेक्ट आंसर हबो ओके फॉस्फोरस हबो नै रंग हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ शूज आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क रे हमें को टाइप रो शू को व्यवहार करबा निहाती दरकार यार आंसर कौन हम समस्ते आंसर दियो 75 नंबर क्वेश्चन एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर लेदर शूज विथ थिक रबर सोल ओके बहुत मोटा रबर सोल थिबा दरकार ता सहित कोन हमर लेदर शू हेथिबा दरकार ए जो 25 टा क्वेश्चन हम माने बे गडेले ए 25 टा क्वेश्चन रु समस्त मते 4 सेकंड जना काहार केतरा ठीक हैला समस्त केही साइलेंट रहिबोनी ओके समस्त जणेबो तम मानकर केतरा ठीक हैला टोटल 25 टा क्वेश्चन रु किए केतरा क्वेश्चन करि पारलो राकेश भाई सीमा भौणी ईश भौणी चंदन भाई ओके एक्सीलेंट मैक्सिमम पिलांगर 18 19 20 रहउची भल अछि किछि असुविधा नै तथापि टिके ताको रिवीजन करो थियोरी को ओके आराम से भल स्कोर करिवो सीमा भौणी एते कमी गला केमिति तमर स्कोर ओके व्हाट इज द चलो नेक्स्ट आउट 25 टा क्वेश्चन रहल ताको हम डिस्कशन करि दबा व्हाट इज द मेन सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन गोटे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड सबुठारु सिंपलेस्ट मेथड काहा को हम को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड रे सबुठारु सिंपल मेथड हैला माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड ओके ओटा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फायर साउंड सिग्नल सिस्टम कोटा गोटे फायर साउंड सिग्नल सिस्टम रे जाउची कोटा गोटे पार्ट एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर स्मोक हीट कौन डिटेक्टर बेल्स डीसीएम पैनल्स अलार्म बैटरीज ए सब तक मोर गोटे गोटे पार्ट है कारण ना सर फायर साउंड सिग्नल गोटे गोटे पार्ट फायर साउंड सिग्नल रे कोटा सब तक पार्ट गोटे गोटे स्मोक धुआं हे जीवो हीट डिटेक्टर स्मोक बा आ कोन हीट डिटेक्टर जोटा हम यूज करूछु ओके सब देखिथिबो बड़ बड़ बिल्डिंग मानकर ऊपर गोटे गोटे लागि थाए ओके ता सहित बेल्स पाखरे को किछि माने कोन अलार्म पे बेल्स थिबो डीसीएम पैनल अलार्म्स रहउची ता सहित बैटरीज मध्य किछि जगह रे यूज होउची ओके ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो यार नेक्स्ट क्वेश्चन an electrical shock with an electric current of more than dash will burn the skin केते परिमाणर इलेक्ट्रिकली आम बॉडी रे फ्लो हेले आम बॉडी टा बर्न आउट हे जिवो बर्न आम स्किन टा को से पोड़ी दबो एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर 200 मिली एम्पियर अधिक हले मैं कोन कहिदिले ना सर 100 रु 200 हेले कोन हमर डेड हे जिवार चांस अछि 100 रु 200 हेले हमर डेड हे जिवार चांस 100 ऊपर मैक्सिमम 100 ऊपर को गला माने डेड हे जिबा ओके तो मोस्ट 200 मिली एम्पियर जदी फ्लो हैला बॉडीटा बर्न आउट स्किन पूरा जळे दबो ओके ऑप्शन बी हबो 10 मिली एम्पियर तो स्लाइटली शॉक मारिबो ओके 10 मिली एम्पियर जो कहूचो 10 मिली एम्पियर 15 मिली एम्पियर ये सब स्लाइटली शॉक पेनफुल शॉक हबो केते 15 रु 25 30 भीतर पेनफुल शॉक को जगह रे कोन दोची ठीक ठिकाना नै ओके
50 मिली उपरू कहले हमर रेस्पिरेशन सिस्टम खराब हो जीवो ओके बट 100 मिली एम्पियर उपरू कहले बॉडी कोन आमे पूरा डेथ हो जीवार चांस पॉसिबिलिटी अछि ओके 50 मिली एम्पियर उपरू को डेला माने हमर संभावना हमर रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा खराब हो जीवो ता सहित आमे डेथ होबार संभावना अछि बट जदि 100 मिली एम्पियर मैक्सिमम हे गला आ बंचिबार चांस नै ओके क्लियर ना समस्त क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त चेष्टा कर अटेंड करिया को क्वेश्चन टा कौन कहले ना सर क्लोराइन सिस्टम टा इनक्लोज करूची शैल बी पोस्टेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन कौन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कहजे फॉर वार्निंग ऑफ द hazard टू हेल्थ ओनली समस्त क्वेश्चन टा गुटिके सर्च करिवो मते भी क्वेश्चन नो आंसर जणा ना ओके ए क्लोराइन सिस्टम टा मो भी जानि नी भलसे नेक्स्ट क्वेश्चन which of the quantity is responsible for electrical current phenomena electrical current ro phenomena रे कोउटा गोटे तार क्वांटिटी जाउछ which of the quantity is responsible को क्वांटिटी ता responsible डाइइलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ना मेटल ना चार्ज टा एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर इलेक्ट्रिकल करंट में को क्वांटिटी ना में नोच कोट करंट क्वांटिटी ता रेस्पोंसिबल ना चार्ज ता हमर रेस्पोंसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग्स इज द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट कोटा गोटे कॉज ऑफ एक्सीडेंट होबार मेन कॉज ए जो चारिटा जिंस दल लैक ऑफ अवेयरनेस हमर अवेयरनेस ठीक रे रहिबनी ओके डेंजर प्रति ता सहित कोन कहला नॉलेज ऑफ टूल्स हमर टूल्स ऊपर व्यवहार करिवार नॉलेज नथिबो नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर हमें सेफ्टी केमिति रखिबा ताकू भी हम जाना नथिबो सबुतक ए सबुतक रो जोदि कोनो सिटी भी गोटे तमे मिस करि दोछ ना एक्सीडेंट होबार चांस अछि ओके तो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए prescription to be taken while using electrical equipment जते बेले हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को व्यवहार करबा ना से समय को प्रेस्क्रिप्शन टा को हमें यूज करबा कोन हबो राकेश भाई किछि प्रॉब्लम अछि Excellent. Huh? No necked wire should not be grasped. Next question. By which of the following method can we avoid accident? By which of the following method? एतो को following method जो चारिटा मेथड देले कोटा को हमें अवॉइड करबा एक्सीडेंट पई एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर एक्सीडेंट को अवॉइड करिया पई हमें सब प्रकार सेफ्टी रूल्स को फॉलो करिबा वर्क रो स्पेसिफिक मशीन्स विषय रे हमर नॉलेज थिबा दरकार वर्क रो जेति कि हमर टूल्स यूज होची ता ऊपर हमर नॉलेज रहिबा दरकार सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हैला समस्तंकर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शंस इज नेसेसरी टू अवॉइड एक्सीडेंट एक्सीडेंट को अवॉइड करिया पई को जिनिस गुडा निहाती दरकार to follow the safety rules on the machine is to act in haste na exception of old rules na to follow the old rules no कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सर मु सब प्रकार रो सेफ्टी रूल को फॉलो करिवि जहां भी सेफ्टी रो इक्विपमेंट सब अछि जो 8 प्रकार सेफ्टी अछि ताको मु व्यवहार करिवि ओके ता सहित मोर टूल्स ऊपर नॉलेज रहिबा निहाती दरकार ता सहित मते कोन ना मोर अवेयरनेस ता भलो भाबे रहिबा दरकार वर्क करिबा समय ओके समस्तंकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन
Which of the following options is one of the basic safety rules? ये जो basic safety rules हमर अछि ए भितरु को ऑप्शन टा होची तार कोन? Which of the following option is one of the basic safety rule? से basic safety rule रो कोटा गोटे ऑप्शन कोटा गोटे जाउची हमर basic safety rule रे? Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर सर needed to be कोन precaution taken by workers while operating the machine. जेतो बळे आमे मशीन को ऑपरेट करिबा आमे फर्स्ट कोन जेति कि भी हमर सेफ्टी प्रिकॉशन अछि ना ताको आमे फॉलो करिबा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following insulating material is made by chemical treatment of a cotton thread? Which of the following instrument, okay, insulating material is made by chemical treatment of cotton rags? एटा आर्टिफिशियल लेदर बोली कहूची. ओके. ए क्वेश्चन टा आसीथिला हमर कोठी डीएमआरसी रे पकेइथिला. ओके. डीएमआरसी रो मेंटेनेंस रे क्वेश्चन टा आसीथिला हमर 2018 रे. ओके. क्वेश्चन रो आंसर हिसाब रे एटा हो आर्टिफिशियल लेदर. माइक यूज हम ना. ओके. कौन कही ना सर को टाइप रो इन्सुलेटिंग मटेरियल को आमे यूज करिबा केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन रैग रो केमिकल ट्रीटमेंट पई आमे आर्टिफिशियल लेदर को व्यवहार करूछु बोली से कहि छै. ओके. समस्त एटा ऑप्शन बी बोली करेक्शन करो. ओके. ऑप्शन बी ही हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. During electrical work, which one of the following avoid electrical shock? आमे जतबळे इलेक्ट्रिकल वर्क करूछु ना कोटा को आमे फॉलो करिबा नेहाती दरकार. कोन पई ना इलेक्ट्रिकल शॉक रु प्रिवेंट करिबा पे. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर ड्राई वुड आमे सिटी व्यवहार करू. नेक्स्ट क्वेश्चन. The induced low voltage in metal equipment which causes slow electrical shock can be prevented by using dash. क्वेश्चन आंसर समस्त दबाक चेष्टा करो. देखो कौन कही जाए कि क्वेश्चन टा देखो. The induced low voltage in इलेक्ट्रिकल शॉक जेमिति न लागिवो कैन बी प्रिवेंट किए ताको प्रिवेंट करूची किए. एक्सीलेंट सर यार्थिंग ता जदि कोनोसी प्रकार लो वोल्टेज हमर बाहरी जाउची देन जदि हम यार्थिंग प्रॉपर यार्थिंग करिथिबा देन से ग्राउंड हे जिवो से वोल्टेज हो से करंट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई रूल. देखो क्वेश्चन आसिला आई रूल ऊपर. ओके. केते गुडा आई रूल मोस्ट इंपोर्टेंट रहूची. ओके. कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई रूल gives importance to the registration by restoration of the victim of electrically shock. मोर electrically shock टा जो victim को लागुची सेटा केते नंबर आईयू रूल रे जाउची. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर कट आउट रूल 44. ओके. कट आउट रूल 44 कौन कहिला अकॉर्डिंग टू आई रूल कट आउट रूल 44 हिसाब रे हमर जो इंपोर्टेंस टू कोन रिजेक्शंस ऑफ द विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक एटा हमर 44 नंबर आई रूल ले जाउची. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन ऑफ नॉर्मल एज एंड हेल्दी. ओके. नॉर्मल गोटे हेल्दी पर्सन रो तार रेजिस्टेंस वैल्यू केते रहिबो बोली पचारला. ना कि छोटो पिला ना कि वृद्ध लोक मीडियम. गोटे हेल्दी लोक रो तार रेजिस्टेंस वैल्यू टा केते रहिबो बोली कहि छै.
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हबो एटा ओके 1 किलो ओम। If the magnitude of the current passing through the human body is follows, then there will be no feeling of shock. एमिति केते मिली एम्पियर करंट आम बॉडी भितर जदि फ्लो करूची हमको शॉक फील हबो नाही। आम बॉडी रेजिस्टेंस पावर ताको कोन अपोज करि दबो केते मिली एम्पियर पर्यंत। देखो एटा पूरा भल्ले मु कहि दउजी एटा बारंबार क्वेश्चन में आसुची। ओके फास्ट कथा से कहले केते मिली एम्पियर पर्यंत हम बॉडी रे करंट फ्लो हैला हमें सेटा को संभाली परिबा। फास्ट कथा 1 मिली एम्पियर पर्यंत जदि हम बॉडी भितर करंट फ्लो होची देन हमें कोन करि परिबा ना सर हमको फील हबो नै। ओके आ गोटे जिंस आसुची 1 रु 8 मिली एम्पियर माने कोन हबो शॉक टे अल्प टिके फील हबो कोन 1 रु 8 मिली एम्पियर रे। ओके तापर आसिला 15 रु 20 मिली एम्पियर। ओके एई समय रे कोन हबो ना एई समय रे हमकु पेनफुल शॉक हबो। ओके पेनफुल शॉक हबो जोटा कि तुम एटा 8 रु 20 न 8 रु 25 मध्ये बेले बेले ऑप्शन रे पचारुची। ओके से समय रे कोन हबो बॉडी रे पेनफुल शॉक हबो रेस्पिरेशन सिस्टम ऊपर प्रभाव पकेयो ब्रीथिंग तापर ताठो टिके मैक्सिमम जदी 20 रु 50 भीतर को पळि आसिला देन से समय रे तमरो रेस्पिरेशन सिस्टम ता खराब हे जिबार चांस अछि। ओके 20 रु 50 समय रे तापर हमर विभिन्न प्रकार ऑर्गन ऊपर फॉल्ट करेबो। ओके आउ जदि 50 रु मैक्सिमम गला देन हमकु कोन डेथ होबार संभावना अछि पूरा हमर रेस्पिरेशन सिस्टम ता खराब हे जिवो आ 100 रु ऊपर को पळेले बॉडी ता बर्न आउट हे जिवो। ओके हमर स्किन धीरे धीरे पड़ी जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डैमेजेस दैट कैन बी हैपन टू पर्सन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक। जेतोले गोटे पर्सन रो इलेक्ट्रिकल शॉक लागु देन कोन हबो बोली हमकु पचारि छि व्हाट हैपन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर एटा कोन हबो जदि गोटे पर्सन रे कोन तार करंट शॉक लागुची कार्डियक अटैक होबार चांस अछि। ओके शॉर्टनेस ब्रीथ रे प्रॉब्लम आसीबो आउ कोन हबो ना सर ब्लिस्टर्स और बर्निंग ऑफ द फ्लैश बेसी जदि करंट फ्लो हे गला तने बर्न भी हे जिबार चांस अछि। सो ऑप्शन डी हबो एटा करेक्ट आंसर। ओके सबु तक हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the followings can be used to extinguishing an electrical fire। electrical fire को आमे extinguish माने लिभेबा पई आमे काहा को मोस्टली यूज करूछु वाटर ड्राई सैंड कार्बन पाउडर ना नन ऑफ दिस। एटी कार्बन पाउडर पचार जी भल से क्वेश्चन पढिबो तापर आंसर दबो। ओके CO2 कहि नै खाली कार्बन पाउडर कहिला। ओके भल से टिके टिके रे तमरो भूल हे जिवो। एक्सीलेंट जो माने ड्राई सैंड कहउछो से मानकर करेक्ट आंसर अछि। ओके नन ऑफ दिस भी हबो हला ड्राई सैंड अछि हमें ड्राई सैंड व्यवहार करि परिबा ऑप्शन सी ही हबो। जो जगह रे तमरो ऑयल पड़ी जाइथिबो माने हम फ्लोट रे धरो कोन हमरो रूम में धरो ऑयल पड़ी जाइछि। ओके देन से जगह रे हम काहा को यूज करिबा सैंड को ना वुड रो रस्ट को ना वाटर को ना काहा को तो क्लीन करिया पई ना क्लॉथ को। कौन हम हाँ वुड डस्ट को आम व्यवहार करवा है। एटा भी मस्त गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार पचारूची। सुनील भाई से जगह वुड डस्ट हम काठ गुंड जो काठ गुंड पका हम कौटी ना जो समय आम तले फ्लोट रे कौन ऑयल टा पड़ जाइथिबो। ओके
Which of the following is the cause of sparking in an electrical appliance? गोटे electrical appliance रे एमिति को कारण पई हमर shock produce होउची, shock टा produce होउची. Loose connection हेले short circuit हबो. Okay, option A is the correct answer. Next, the background color of informative sign, very important. Informative sign रो क्वेश्चन आसिला. Informative sign रो केमिति देखिबा पई फर्स्ट कथा तार शेप टा पचारुची, शेप टा स्क्वायर हे परिबो. ओके, से तार आउ तार बैकग्राउंड कलर कोन हबो? बैकग्राउंड कलर कोन हबो? रेड, ब्लू, ग्रीन ना येलो? कोन ऑप्शन डी भी पळि आछि. येलो तो हैला हमर वार्निंग साइन रो. एक्सीलेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सर ग्रीन कलर हबो तार बैकग्राउंड. तार सिंबल कलर कोन हबो? सिंबल कलर टा व्हाइट कलर हबो. ना को कलर हबो? Okay, next question. Which of the following fire extinguisher most not be used for fire generated due to electricity? Which of the following fire extinguisher most not be used fire generated due to electricity? Electricity कारण रो जोदी हमर कोनोसी प्रकार करंट निया लागि जाउ. सॉरी हमर करंट हां निया लागि जाउ. दिन हम को टाइप रो एक्सटिंग्विशर को व्यवहार करबा नै. फोम टाइप. एटा रिपीटेड हे जाई छी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आईएसओ का पई स्टैंड होची? आईएसओ रो फुल फॉर्म हमको पचरिला. तीनटा फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट. गोटे हला बीआईएस, आ गोटे हला कोन आईएसओ. ओके, आ गोटे हला एएसए. बीआईएस तो समस्त जानिलो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. सेमिति आईएसओ माने कोन ना सर इंटरनेशनल. केई भी इंडियन मारिबोनी. ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. आ कोन कहले एएसए. आ गोटे हला एएसए अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन. ओके, आईएसओ हला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड. ऑप्शन बी हबो. जो माने बी को जो ठीक. ओके, केही भी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मारी की पळि आसीबोनी. एटा भूले जो बहुत गुडा फुल एटा बहुत गुडा पिला एटा को भूल कर दे के आछुंदी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In order to extinguishing electrical fire, which kind of fire extinguisher should be used? को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज करूछु? बी टाइप, ए टाइप, ए एंड बी टाइप ना सी टाइप? In order to extinguishing electrical fire, which kind of fire extinguisher should be used? एठी कोन हबो? एई बेले सिचुएशन रे सब बेले ऑप्शन को फॉलो करिके आंसर अटेंड करिवो. ओके, एटार रियल आंसर ऑप्शन डी होबा कथा. जेहेतु एठी ऑप्शन डी नाही, नन ऑफ दिस जदि थिबो नन ऑफ दिस मारिबो, नहले क्लास सी टाइप मारि के आसले मते भूल होबो नै. ओके, एई क्वेश्चन टा हमर आसीला कोठी यूपीपीसीएल टीजीटी 2 रे आसीला क्वेश्चन टा 2015 क्वेश्चन. ओके, आंसर देई जी क्लास डी, बट आंसर ऑप्शन ने नाही. सो एटा ग्रेस मार्क पिला मान को मिलिथिला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a type of safety in occupational safety? Occupational safety ए जो चारिटा सेफ्टी देला कोटा गोटे नुहे. मशीन सेफ्टी जाउची, बॉडी सेफ्टी, वर्क सेफ्टी, रोड सेफ्टी. कोटा नुहे? एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर टा रोड सेफ्टी रे जाउने. ओके, ओके, आमर सेफ्टी चैप्टर टा हमें कंप्लीट कर देले. पाखा पाखी 100 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन करले. आज जो 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करले, पाखा पाखी 30 रु 45 टा पर्यंत को माने रखिछ? को माने 30 रु 45 टा पर्यंत क्वेश्चन करि पारलो? ठीक करजो. आ जो भाई भौणी मानकर 30 रु तळक रहिछि, टिके भलो भाबरे तमे थियोरी टाकू टिके देखो. ओके, ताकू टिके रिवीजन करो. ओके, देन तम मानकर भी मैक्सिमम रहिलो. जो भाई भौणी भी मोर रखिछ 30 रु कम 20-25 भितर जो माने अच्छो से माने निहाती टिके रिवीजन बारंबार करो. ओके,
रोची जय जगन्नाथ नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हवा ओके आ गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं कि जोटा कि ओरिडा रे हमर आसीबार अछि नेक्स्ट क्लास आमे का ऊपर करबा सेल एंड बैटरी ऊपर करबा क्वेश्चन डिस्कशन ओके ना को चैप्टर करबा क्वेश्चन तुम माने को सबु चैप्टर तो हमर जेतिकी भी अछि हमर कोन जेतिकी भी चैप्टर हमर सिलेबस रे अछि से सबु तकर क्वेश्चन हबो ओके प्रैक्टिस करा जिवो आगो पिछा है कि टिके हबो एग्जाम तो आज नहीं भाई ए भूणी काली हबो हला एग्जाम हबोनी नुह से पोस्टपोन करा जाय कोनोसी कारणरू किंतु ठीक करूना ये सब जिनस गुड़ा ठीक करूना गोटे पिला एते डेडिकेटेड हे कि पढुथबो प्रिपरेशन करूथबो किंतु तापरे भी जदि एमिति एग्जाम कोई भुलिया करिवे थियोरी तो भाई एबे चली थियोरी भी जहाले भी प्रत्येक दिन रोचे ना मु तो एबे हमर कोन सोलार सिस्टम रो थियोरी पढौची एपटे केबल रो भी थियोरी कंटिन्यू चली सार थियोरी आ 5-7 दिन परे करिवे ओके एबे मेनली टारगेट 2000 प्लस क्वेश्चन केमिति हमें प्रोवाइड करू प्रैक्टिस पई सब एग्जाम पई जेमिति सेटा हेल्पफुल होबो से प्रैक्टिस सेट पाखा पाखी 25 रु 30 टा क्लास रही टारगेट ओके मैक्सिमम 2000 रु 2500 टा क्वेश्चन जेमिति हमें गडे देथिबा ओके सब चैप्टर रु जेमिति हमर सरी जिवो तापरे थियोरी करिबा सुशांत भाई देखो गोटे टोटल गोटे ओपीटीसीएल रो सिलेबस कंप्लीट है कि रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल अछि जोटा भी तुम चाहो सेठु जाई देखि परिबो रिकॉर्डेड सेक्शन में अवेलेबल अछि तापरे नुआ जो थियोरी चलछि से धीरे धीरे कंटिन्यू चलिबो ओके भाई हबो नहीं वेस्ट बेंगल जोटा लिमिटेड डब्ल्यूपीटी डीसीएल जोटा अछि सेटा तार कंपलसरी मागुची कोन बेंगोली लैंग्वेज टा कंपलसरी मागुची हमर जेमिति ओपीटीसीएल थिला ओडिया लैंग्वेज हमर हाँ ओडिशा पिला केवल पकई पारे सेटा 20 मार्क रोज 20 मार्क ना 10 मार्क एमती रोज बेंगोली लैंग्वेज सो सेटा जदि आमे माने जानि नाहंती ना से लैंग्वेज टा सो आम माने सेठी पकई परिबानी इंटरव्यू भी रही 100 मार्क रो बेंगोली लैंग्वेज टा कंपलसरी मागुची सेठी ओके